Okay, so last time we talked about formulating research questions, turning research questions into research objectives. What are the characteristics of good research objectives? We also talked about different, uh, different examples. We also discussed different examples of research questions and research objectives in the business and management research, right? Today we are going to move on. We'll cover two important areas. One is, what is theory and how we can derive research questions from theory. And second is, we're going to see how to develop a research proposal, right? Uh, so, um, so what is theory? I mean, we've heard this word a lot. Uh, Almost in any subject we study, we use this word theory, theoretical. You know, uh, we've seen scientific theories, Newton's theory of gravity. We've talked about Einstein's theory. We've talked about different theories in the social sciences, right? So, what exactly is theory? A theory is a formulation regarding the cause and effect relationship between two or more variables, which may or may not have been tested. So it's not necessary for theory to be tested before it becomes theory. Theory is basically assumed relationship between two or more variables. It is cause and effect relationship. You know, if you can see these words, cause and effect relationship. So basically, theory is we assume that two variables are logically related. One causes another, right? Um, for example, amount of rain causes high yield, high crop yield, or हम ये कहते हैं कि गर्मी ज़्यादा पड़े तो आम ज़्यादा मीठे होते हैं. So in any case, two variables which are somehow one way or the other linked, which one causes another one, that you know, a logically presented relationship of different variables, that is called theory. I mean, there are many theories in the social sciences. There are theories which are very popular one. They are considered to be the major theories, and then there are theories which only focus on particular situation or particular type of variables. So if we look at this, we've got grand, middle range, and substantive theories. Grand, middle ranged, and substantive theories, right? So grand theory is usually they are not generally used by the natural scientists. For example, Newton's theory of gravity, Darwin's theory of evolution, right? Einstein's theory of relativity. So these are generally grand theories are used by the natural scientists, right? Now, if we talk about middle range theory, middle range theories lack the capacity to change the way in which we think about the world, but they're still significant, right? Um,
Some of these theories of human motivation are well known to the managers in this category, for example. Uh, and the third form is the substantive theories. They are restricted to a particular time, research setting, group, population, or problem. And most of us in the social sciences, when we are conducting research, we are focusing on substantive theory. So first, nature, the grand theories, which are generally used by, are universal in nature, used by scientists generally. Then we have got middle range theories, which are generally like they are important, but they are sometimes a bit general, right? Application might not be very specific, right? And then we've got substantive theories, where they are restricted to particular time, research setting, group, or population, or a particular problem. So if you look at this, you know, increasing capacity to change in which the world thinks. So if you look at this, it increases as we move from substantive theories to grand theories. Obviously, substantive theories are for certain contexts, right? So it may not change the way we think about the world. However, on the other hand, increasing restriction in terms of general applicability, applicability increases, in the substantive theories, because they are meant for particular situation, particular context, right? So here is the recap. Grand theory is usually thought to be the province of natural sciences. This will lead to the whole new way of thinking about management. Middle range theories, which lack the capacity to change the way in which we think, nonetheless, they are significant. And substantive theories, they are restricted to particular time, research setting, and particular group or population. Now, there are two types of approaches. One is deductive approach. This is important. You need to understand this. One is deductive approach. The second is inductive approach. Now, when we are conducting research, it's very important to understand what approach we are going to pursue. So the discussion of theory does, it does assume that a clear theoretical position is developed prior to the collection of data, which is deductive. In other words, what we do, we have a clear idea what we are going to test based on theory. We develop theoretical arguments, right? We develop theoretical arguments based on theory. We assume relationship, and then we are going to test it. For example, we know based on theory, people who are psychologically depressed, unhappy with their organization, they are likely to leave organization. They're more likely to leave organization compared with the other ones, right? So based on theory, हम ये कह रहे हैं कि बंदा नाखुश होगा तो, और based on the logic, if the person is unhappy, he might leave the organization, right? So this is kind of deductive approach. We've got arguments in place, right? What we do, we test it. अब ये ज़रूरी नहीं कि हम डिडक्टिव अप्रोच में, अगर क्योंकि लॉजिकल रिलेशनशिप मौजूद है तो हमेशा हमारे रिजल्ट इसको सपोर्ट ही करेंगे. We test theories because we really want to know whether data supports it or not. हो सकता है डेटा ना सपोर्ट करे, बंदा बड़ा नाखुश है और वो छोड़ना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन छोड़ के हो सकता ना जाए, इस वजह से कहीं दूसरी आपकी जॉब्स ही ना अवेलेबल हो.
As far as the testing is concerned, far as the deductive approach is concerned, deductive approach means we start with theory, right? We start with theory and we start developing hypothesis out of the theory, right? और उस थ्योरी पे हाइपोथेसिस पे बेस करके हम जो कीप के को परसू करते हैं, हम डेटा कलेक्शन करते हैं और उस डेटा कलेक्शन से वो थ्योरी कंफर्म होती है या रिफ्यूट होती है, ठीक है। तो एक चीज़ हम लॉजिकली थ्योरी से शुरू किया और दूसरी तरफ आगे उसे टेस्ट करने के लिए। सो फर्स्ट इज थ्योरी, hypothesis, and then there's testing. On the other hand, inductive approach is different. Inductive approach is not first deciding what theory says. It is not first, it's not basing your research on the pre-established theory. Rather, the study is based on principle of developing theory after data has been collected. In other words, आप कहते हैं कि जनाब मैं पहले से ज़्यूम नहीं करता थ्योरी क्या है, मैं पहले से ज़्यूम नहीं करता कि लोग छोड़ के जाते हैं, बल्कि मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ें। जब बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया और उससे डेटा पैटर्न आप डेवलप करते हैं, उस डेटा पैटर्न की बेसिस पे आप थ्योरी डेवलप करते हैं, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। फॉर एग्जांपल, आप अगर सड़क पे खड़े हो जाएं, आपके मैं देखता हूँ कि कौन कौन ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, और आपने देखा कि जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले थे वो सारे वो लोग थे जिन्होंने मोटर बाइक्स पे थे, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, ठीक है। और साथ में वो जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, साथ में वो भी लोग थे जिनमें ज़्यादातर यंग एज के थे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आप बेसिकली डेटा से, आप ऑब्जर्वेशन से पैटर्न्स पिक करते हैं। उन पैटर्न्स की बेसिस पे आप ये थ्योरी बना सकते हैं कि जी यंग एज का या लैक ऑफ lack of probably the training, lack of driving training is linked with the traffic violation, right? So ये आप कह सकते हैं जी young age is linked with the traffic violation. अब आपने क्या किया, बेसिकली थ्योरी जो डेवलप किया, पहले से किसी थ्योरी को लेकर हाइपोथेसिस नहीं डेवलप किया, बल्कि पहले आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे आप पैटर्न्स डिफाइन कर रहे हैं कि मैंने देखा है कि जितने लोग यंग थे वो इस तरह कर रहे हैं। या आपने कहा कि यार जितनी जो है ना वो होता है यूनिवर्सिटीज़ में, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जनाब जो ज़्यादातर लड़ाई करने वाले लोग हैं वो उनके लो ग्रेड्स वाले लोग हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब इस तरह आप बेस्ड ऑन the data patterns, right, that we observe, we develop our theory that is called inductive approach. So deduction, we start with the theory, develop hypothesis, test it. On the other hand, in the deductive approach, we start with the data, we observe patterns, and then based on those patterns we develop a theory, right? So we've got the next thing we are going to discuss is writing your research proposal, and that is extremely important. It is extremely important because you are required to write a research proposal whenever you have to do your thesis or a project, or when you're applying anywhere for a master degree program or a PhD program, right? You are applying for any research grant, you need to write a research proposal, right? So research, that's why it's very important that you understand the contents of research proposal and you are able to develop
an effective research proposal, right? So a research proposal is basically what it is. A research proposal is creating a clear specification to guide our research project. Its research proposal is a proposal in which we decide what exactly we are going to do. Though it is still proposal, right? We can make changes in it, but obviously it is clearly outlining what you want to do in a research, right? So now a good research proposal basically, if you there's a very useful box, checklist box in your book, 2.13, right, which is on page 54. It says, I mean, there are some very useful guidelines. You need to see whether you have explained what you are going to do. So in research proposal, you need to explain what you are going to do. Whether you have explained why you are doing this, so research motivation, right? Whether it is worth doing, so you need to write research significance. You need to tell the reader why is it important, why is it important area to research. For example, मैं ये कहता हूँ कि जनाब मैं करूँगा, रिसर्च करनी है मैंने, और रिसर्च इस चीज़ पे करनी है कि मैं देखूँगा कि लोग मास्क पहनते हैं कि नहीं। तो हालांकि अब आम हालात में अगर देखा जाए ना, आज से 1 साल पहले मैं कहता कि जनाब मैंने रिसर्च करनी है कि लोगों ने चेहरे पे मास्क पहना होता है कि नहीं, तो वो कोई भी बंदा पूछता कि भाई ये क्यों कर रहे हो रिसर्च, ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट रिसर्च नहीं है कि आपके कि लोगों ने कैप पहनी हुई है कि नहीं, मास्क पहना हुआ है कि नहीं, लेकिन आपने ये बताना है कि क्यों, व्हाई इज इट वर्थ डूइंग। आप बताएंगे कि जनाब ये क्योंकि इट इज लिंक्ड, वेयरिंग मास्क इज लिंक्ड, obviously it is important for safety in the current the prevailing situation, COVID-19 situation। और इस वजह से हम ये देखना चाहते हैं कि जो लोगों का लाइफस्टाइल है, जो मास्क पहनते हैं नहीं, उससे दूसरों को वायरस ट्रांसमिट होने का कितना खदशा है, और इससे सोशल इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी है, लोगों को बीमारियों से बचाया जा सकता है रिकमेंडेशन की बेसिस पे। So this is the significance, this is, and that is why this research is worth doing, right? So आपने इंपॉर्टेंस भी बतानी है, फिर आपने ये बताना है कि ये कैसे आपके सब्जेक्ट एरिया के साथ, मसलन यही मैंने आपसे बात की, COVID-19 मास्क पहनते हैं लोग के लिए। अब आप कहेंगे कि जी मास्क पहनने ना पहनने का मैं इसलिए कर रहा हूँ, अब कोई बंदा आपसे पूछे जी ये तो मेडिकल वालों का काम है, आप क्यों कर रहे हैं रिसर्च, आपने बताना है कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी में लोग काम करते हैं, बड़े क्लोज एनवायरनमेंट में काम करते हैं, इसलिए हमने उन्हें ये गाइड करना है, ट्रेन करना है, उन्हें काउंसलिंग करनी है उनकी कि उन्होंने मास्क पहनना है। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है पहले लोगों का मास्क वेयरिंग बिहेवियर पता किया, ठीक है? तो आपने अपने एरिया के साथ लिंक भी करना, राइट? देन important thing is, have you stated your research questions and research aims and research objectives? So research question, we've already talked about this in the last lecture. Research question is the broad statement what you are going to do, और उसको हमने कहा था जब उसको ऑपरेशनलाइज कर लेते हैं रिसर्च क्वेश्चन को, उससे स्पेसिफिक एक्शनेबल चीज़ों में उसे स्प्लिट कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, राइट? आपकी रिसर्च प्रपोजल में रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और रिसर्च एम्स उसमें आप अगली चीज़ ये कि मैं अभी आपको इसका फॉर्मेट भी दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो आपकी रिसर्च प्रपोजल में रिसर्च डिज़ाइन है या नहीं। हम अभी देखेंगे रिसर्च डिज़ाइन क्या है,
ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसमें सैम्पलिंग डिटेल्स दे सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है या क्वांटिटेटिव करनी है, जो क्या मैंने सर्वे अप्रोच यूज़ करनी है या नहीं करनी, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर आपने ये बताना है इसी प्रपोजल में कि किस तरह का आपको डेटा चाहिए। ठीक है, सो डेटा की रिक्वायरमेंट और आप कैसे डेटा इकट्ठा करेंगे। आप कहते हैं जी मैं डेटा लूँगा, उसमें मैं प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू करूँगा। तो अगर आप ऐसा कोई क्लेम करते हैं या बताते हैं कि मैंने इस तरह डेटा लेना है, तो आपने ये भी बताना है कि वेदर यू हैव गॉट द डेटा एक्सेस और नॉट, whether you how you're going to select your participant, whether you've got data access or not, right, and how you're going to collect the data. फिर आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे अपने डेटा एनालिसिस एक्सपेक्टेशंस के बारे में, और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि इस रिसर्च करने से आपको क्या पोटेंशियल फाइंडिंग्स मिल सकती है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज you also need to consider ethical issues in the research proposal. Um, so the first thing in the research proposal format is the title of research. Title. Always remember, when you start working on a proposal, you might have a different title, but by the time you finish your proposal or you submit it, you might have changed it, right? It's it's obviously it's not ideal to keep changing your title, but when you start conducting a research, you realize that there are probably your variables need more refinement, they need better logical relationship, better title, in other words, right? So we've got title, the background, the context within the literature. अब इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने लिटरेचर से ये पता करना है कि आपका टाइटल जो आप जो चूज़ कर रहे हैं, जो स्टडी आप करने जा रहे हैं, उसकी लिटरेचर में क्या डिस्कशन है और लिटरेचर इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट अगर आप कहते हैं लिटरेचर में ये चीज़ें हो चुकी हैं और इसलिए, लेकिन अभी तक ये वाली चीज़ नहीं हुई, अब मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, उसके लिए आप अपना रिसर्च क्वेश्चन देते हैं कि मैं ये काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जनाब लिटरेचर ने पहले ये तो देखा है कि लोग जो है ना वो जॉब की वजह से स्ट्रेस्ड होते हैं, लेकिन लिटरेचर ने इस चीज़ को नहीं देखा कि अगर सिचुएशन अनसर्टन, इर्द गिर्द बीमारी हो और वायरस फैला हो फॉर एग्जांपल, जिससे जो है ना जॉब्स बड़ी खतरे में हो, अब ऐसे केसेस जॉब इनसिक्योरिटी हो, अब ऐसे केसेस में कैसे ऑर्गेनाइजेशन रिएक्ट करती है और एम्प्लॉयज़ कैसे स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है, ये चीज़ लिटरेचर में मिसिंग है, इसलिए ये मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। ठीक है, मेथड्स कैन बी इन टू पार्ट्स, डेटा research design. I'll tell you in a minute some detail about research design and data collection. Research design tells us what type of sample you are going to have, what research approach you are going to use. रिसर्च अप्रोच के अलावा आप ये कह सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन में कि अपना यानी आपका टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, और फिर दूसरी चीज़ ये कि डेटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट करना है, कैसे करना है, सर्विस के जरिए करना है आपने, अगर सर्वे यूज़ करने हैं तो कैसे आपने उन्हें बाय पोस्ट सर्वे भेजने हैं, व्हाट्सएप पे भेजने हैं, आपने फ़ोन कॉल पे डेटा इकट्ठा करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड देन द last two sections include time scale and resources. Generally हम एक गैंट चार्ट बनाते हैं, स्टूडेंट्स को कहते हैं गैंट चार्ट बनाएं, जिसमें आप टाइम लाइन देते हैं कि जनाब
पहले महीने में मैं ये काम करूँगा, दूसरे महीने में डेटा कलेक्शन करूँगा, तीसरे महीने में डेटा एनालिसिस करूँगा, चौथे महीने में डेटा राइटअप शुरू करूँगा, पांचवें में उसे फाइनल करूँगा, छठवें में सबमिट करूँगा. Just an example, right? Timeline and resources required, they are given in the research proposal, and the last section is references, providing references, literature sources, right? Now, I'm going to switch to another window, share another screen with you. That is from your book. It has got a research proposal example, right? Look at this, how you are going to structure your research proposal. The first thing is a title, right? And if you look at this box, there are different examples: focus on research, student research, devising research proposal title, right? Here's an example: Imran reworded his research question into the following title for research proposal: the reason for mismatch between corporate strategy and corporate and external environment. Tom devised the title of this research proposal: the effectiveness of internet and internet channel for employee communication. So basically what we are suggesting, whatever is your research question, whatever you want to do, you need, the important variables should be there in your title. What is not a good title? जैसे आप कहते हैं कि जनाब studying business environment and its impact on the business. It's too general, too broad. ठीक है, या आप कह देते हैं कि जनाब मैं जो है ना वो लाहौर के समनाबाद के इलाके में जो है वो मैंने दुकानदारों का ये फॉर एग्जांपल सेलिंग बिहेवियर देखना है. तो आई मीन इट्स वेरी नैरो. अगर आपने समनाबाद के इलाके से भी डेटा इकट्ठा करना है तो आपके टाइटल में नहीं होना चाहिए. जनरली टाइटल आप लाहौर कह देंगे, या आप कह देंगे कि मैं शॉपकीपर्स का बिहेवियर देखना चाहता हूँ, उसमें आप कह देंगे कि मेरा सैंपल, जब अंदर जाकर प्रपोजल में लिख देंगे कि मेरा सैंपल ये है. ठीक है. इसी तरह के एक और एग्जांपल अगर आप देखें, द इफेक्ट ऑफ हेल्थी ईटिंग पब्लिसिटी ऑन स्नैक फूड्स परचेजिंग डिसीजन. अगर आप गौर करें तो आपको इसमें नजर आ रहा है द इफेक्ट ऑफ हेल्थी ईटिंग. एक वेरिएबल ये नजर आ रहा है हेल्थी ईटिंग पब्लिसिटी, और दूसरा जो है स्नैक फूड परचेजिंग डिसीजन, दूसरा वेरिएबल. इसमें क्लियरली वेरिएबल लिखे हुए हैं और ये आप काम करना चाहते हैं. इसी तरह अगर आप पिछला वाला देखें, the effectiveness of internet and internet channels for employee communication. So you clearly know you're going to study the effectiveness of internet channel or internet channel for employee communication, right? So second thing is the background. This section, a number of functions. Basically you make a case for the research in the background. आप ये कहते हैं कि जनाब बैकग्राउंड ऐसी, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने स्टडी करना एम्प्लॉय टर्नओवर बिहेवियर, व्हाई एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन. आप बैकग्राउंड में लिखते हैं कि जनाब लिटरेचर ये बताता है कि जब जॉब्स बड़ी सख्त हो, लोग स्ट्रेस में हो, इस वजह से लोग जो है वो जॉब छोड़ने का सोचते हैं. और स्पेशली जब आपकी जॉब इनसिक्योरिटी हो तो भी लोग जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं. पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर में लोग बड़े लॉन्ग आवर्स में काम करते हैं, जॉब बड़ी स्ट्रेसफुल हैं, उसमें एम्प्लॉय पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है. इसलिए जो है ना फला बंदे ने कहा लिटरेचर में कि जो है ना बैंक में जो है ना लोग इतने खुश नहीं हैं. ठीक है. और इस वजह से क्योंकि बैंक में खुश नहीं है, इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी है ये देखा जाए
कि क्या वो लोग जॉब छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं नहीं, क्योंकि इससे अगर वो लोग जॉब छोड़ें, इससे बहुत सारे टर्नओवर ज़्यादा हो बैंक्स में, उसकी वजह से बैंक्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और बैंक्स की अदरवाइज इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये पता किया जाए कि कौन से फैक्टर्स हैं बैंक्स में या कौन से एरियाज़ हैं जिससे एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रही और टर्नओवर इंटेंशंस बढ़ रही। ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं, आप उसके बारे में बताते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसमें लिटरेचर देखते हैं, उसको अपनी सिचुएशन के साथ लिंक करते हैं, उस सिचुएशन के साथ लिंक करके ये प्रॉब्लमेटाइज करते हैं कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आप कैसे इसे हल करने की कोशिश करने जा रहे हैं। जब आप इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, अब इस स्टेज पे आप आके देते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन कि क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि बैंक में ये चीज़ स्टडी की जाए कि लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, इसलिए मैं स्ट्रेस और जॉब इनसिक्योरिटी का इम्पैक्ट देखने जा रहा हूँ ऑन जॉब टर्नओवर बिहेवियर। ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब रिसर्च क्वेश्चन को फर्दर आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एक ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं रिसर्च जो जॉब इनसिक्योरिटी है इसका रिलेशनशिप देखूं जॉब टर्नओवर बिहेवियर पे। दूसरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये है कि जो जॉब अनसर्टेनिटी है उसका इम्पैक्ट देखूं, ठीक है। तीसरा आप कहते हैं कि ना मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि इसमें कोई सुपरवाइजर अगर अच्छा हो तो स्ट्रेस का और जॉब टर्नओवर रिलेशनशिप का, जॉब टर्नओवर का रिलेशनशिप जो है ये मॉडिफाई हो सकता है कि नहीं, यानी हो सकता है उसे स्ट्रेस हो और वो जॉब छोड़ना चाह रहा हो, लेकिन सुपरवाइजर बहुत अच्छा है, उसे बड़ा सपोर्ट करता है, इस वजह से वो इफेक्ट उतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, ठीक है। तो आप ये स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेथड्स, रिसर्च मेथड्स में जब आप आते हैं, आपने उसमें डेटा कलेक्शन की डिटेल्स देनी है, आपने ये बताना है कि आपने कौन सी रिसर्च अप्रोच यूज़ करनी है, आप इसे क्वालिटेटिव मेथड्स में लेके जाएंगे, क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है तो अपने सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, सैम्पलिंग टेक्निक अगर जो भी आप यूज़ करेंगे उसकी आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि आपने क्यों ये वाली सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ किया। इस पर हम बड़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप जस्ट फॉर द प्रपोजल यू कैन अंडरस्टैंड इट। सिमिलरली द टाइम लाइन और द टाइम स्केल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हेनरी गैंट, ये गैंट का मैं आपको बता रहा था, हेनरी गैंट का, कि गैंट चार्ट हम यूज़ करते हैं। गैंट चार्ट आप मेरे ख्याल अपने सारों ने देखे होंगे, अगर आप किसी ने नहीं देखा तो वो आप गूगल करें, गैंट चार्ट आपको नज़र आ जाएंगे। बेसिकली स्केजुलिंग हम करते हैं कि फर्स्ट मंथ में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड मंथ में कौन सी दो एक्टिविटीज़ हम पैरेलल करेंगे, ठीक है, कौन सी हम एक ख़त्म होगी तो ही नेक्स्ट शुरू कर सकते हैं, ये आप उसका स्केजुलिंग देते हैं। और then we talk about resources, and the final part is the references, right? I'm going to show you a research proposal here. If you look at this, your book, case number 2, which is helpful but not required, a student research proposal, and this is on page 64. Yeah. Look at this. We've got a title here, the applicability of organizational citizenship behavior theory to Chinese organization. Organizational citizenship behavior theory क्या है कि आप कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का सिटीजन समझे, जैसे एक अच्छा सिटीजन होता है जो खुद ही ख्याल रखता है अपने इर्द गिर्द सोसाइटी का,
ऐसे वर्कर्स जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का खुद ही ख्याल रखें, उसकी बेहतरी के बारे में सोचें, उसको कहते हैं ये यानी थ्योरी जो है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर थ्योरी, ये बात करती है उस बिहेवियर की। अब कैसे ये चाइनीज वर्कर्स पे एप्लीकेबल होगी, इसकी इन्होंने बैकग्राउंड यहाँ पे लिखी है कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर थ्योरी के बारे में बताया है, फिर बताया है कि पार्टली बिकॉज सच बिहेवियर कुड सब्सिक्वेंटली बी रिकग्नाइज्ड थ्रू रिवॉर्ड, OCB was redefined as performance that supports social and psychological environment। यानी ये आप देखें कि थ्योरी की डिटेल है। फिर आपने इसके अगले पैरा में बताता है कि a report finding 650 published articles on OCB, mainly examining categories behavior to make OCB, what causes OCB, how OCB is related to other variables, वगैरह वगैरह। क्या हुई है, फर्दर रिसर्च क्या हो रही है, however the continuing to use some of the dimensions of OCB measurement scale associated with them has been questioned for two important reasons. First, nature of work has changed। अब वो यहाँ पे प्रॉब्लमेटाइज कर रहा है। मैं जैसे पहले बताया कि उसने बताया कि जी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इन एरियाज में स्टडी हुई है, लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया, लेकिन इस पे क्वेश्चंस भी हैं और लोग कह रहे हैं कि बड़ी पुरानी डेवलप हुई थी थ्योरी, अब इसकी डायमेंशन चेंज हो चुकी हैं। Manufacturing and manual work is now less important in many economies, while knowledge work is more important। Based on research, the workers that reflect nature of knowledge-based work, such as working flexibility or taking personal initiative, the new scale overlaps with the earlier OCB dimensions that replaces or eliminates outdated items related to willingly obeying rules and regimented working practice। अब ये कह रहा है कि जनाब जो चीज़ें पहले मेजर कर रहे थे वो सूटेबल नहीं रही। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ OCB स्केल्स टू अदर कल्चर। एक तो ये कि कुछ आइटम चेंज होने में, दूसरी ये कि जो जितनी सारी स्टडीज हुई हैं ये सारी वेस्ट में हुई हैं और वो चाइना में स्टडी नहीं हुई। हमें ये पता करने की ज़रूरत है चाइना में ये स्टडी हो सकती है या नहीं, इसलिए ये इसने सारा आगे चाइना का लिटरेचर दिया है। इसलिए अब रिसर्च क्वेश्चन क्या डेवलप किए हैं, टू व्हाट एक्सटेंट ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज आर एप्लीकेबल टू द चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई। दिस इज रिसर्च क्वेश्चन। इसी के देखें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाए, टू आइडेंटिफाई suitable measurement scales for such theory to use for study in the China, to examine relationship in the case study organization between the findings from organizational justice scale and the findings from organizational citizenship behavior scale। अब इसी आप देखें ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं इस रिसर्च क्वेश्चन से लिंक्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो रिसर्च क्वेश्चन कुछ और कह रहा होता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव मर्जी से 5-7 और लिख देते हैं। they must be very closely coherent। Third, to examine the relationship in the case study organization between findings from psychological contract scales and findings from organizational citizenship behavior scale। And then there are some other, right? So basically what we do, we are going to have a broad research question, and based on the broad research question, we try to operationalize, split it into more measurable aims, which are called objectives, right? If you look at the method section, research design, वो बता रहा है कि जी the research is designed to test applicability of these theories in case study Chinese organization। The research will use a survey strategy incorporating existing scales from peer-reviewed, high quality academic journals। The research would be cross-sectional। cross-sectional का मतलब कहता है एक ही वक्त में डेटा इकट्ठा करेंगे, हमने बार बार लॉन्गिट्यूडनल डेटा इकट्ठा नहीं करना।
डिज़ाइन कौन सा है, सर्वे रिसर्च है, सर्वे स्ट्रेटजी है, ठीक है। केस स्टडीज़ हम यूज़ कर रहे हैं इस रिसर्च में, और स्केल जो लेंगे वो लिटरेचर से लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़े से 2-3 लाइनों में उसने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी, ठीक है। इसी तरह पार्टिसिपेंट कौन है, डेटा कलेक्शन कि किन लोगों से डेटा कलेक्ट करना है उसकी डिटेल आ गई, और टेक्निक्स क्या हैं, स्केल्स कौन से आपने यूज़ करने हैं उसकी आपने टेक्निक्स, आपने एनालिसिस कैसे करना है उसने कहा जी IBM SPSS मैंने यूज़ करना है, इस तरह मैंने डेटा एनालाइज करना है, उसकी डिटेल्स आ गई। एथिकल कंसिडरेशन क्या है कि लोगों से धोखा करके नहीं, उन्हें पूरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे रिसर्च का क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उनको हम कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट लेंगे इनकी, और ये टाइम स्केल जो मैं आपसे बात कर रहा था गैंट चार्ट की, कि उन्होंने सबसे पहले शुरू हो रहा है रीडिंग लिटरेचर, वीक 1 से लेकर वीक 9 तक लिटरेचर स्टडी करेगा, तीसरे 5वें 6ठे वीक में जाके फाइनलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव आफ्टर स्टडिंग द लिटरेचर, ड्राफ्ट लिटरेचर रिव्यू, ड्राफ्ट methodology section, research approach, draft research proposal. Once the proposal is finalized, then the questionnaire is developed. Questionnaire बन गया है, अब उसे questionnaire administer करना है, डेटा कलेक्ट करना है, अल्टीमेटली आपने सारी रिपोर्टिंग करनी है, और फाइनल आपकी प्रपोजल रेडी हो जाएगा, थीसिस तैयार हो जाएगा। 19वें स्टेप में इधर जाके वो कह रहा है सबमिट। यू डू नॉट नीड टू मेक दीज 19 स्टेप्स, आप इसे थोड़े भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आप क्लियर टाइम स्केल डिटरमिन करें, कितना आपको टाइम लगेगा आपको अंदाज़ा हो, और ये आपकी रिसर्च प्रपोजल का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। एंड हेयर आर द रेफरेंसेस, जो भी आपने ऊपर यूज़ किए हैं इस प्रपोजल में, वो सारे आपने रेफरेंसेस की डिटेल देनी है। आपके पास ये एक मॉडल भी है रिसर्च प्रपोजल का। बहुत सारे स्टूडेंट्स कई दफ़ा पूछते हैं कि जी मैंने रिसर्च प्रपोजल डेवलप करनी है, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई मुझे पैटर्न नहीं मिल रहा। आप इसे अच्छी तरह एक दफ़ा पढ़ें, डिफरेंट चीज़ें देखें कि कैसे आपस में लिंक्ड हैं, टाइम स्केल आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज़ दिस टेम्पलेट फॉर योर ओन रिसर्च प्रपोजल, राइट। So, discuss अच्छा, तो आज दो चीज़, ये हमारा चैप्टर 2 जो है वो फिनिश हो गया है, रिसर्च प्रपोजल के और ग्रांट थ्योरी के बारे में हमने बात की। अब हम ये कुछ डिस्कशन ये करेंगे कि कैसे हम इसे नंबर एक तो मैंने कल आपसे कुछ चीज़ें कही थी, कैसे आप डिफरेंट आर्टिकल्स के सिर्फ टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि करंट टॉपिक्स क्या हैं, और हाउ यू आर गोइंग टू extract from the literature review, from the media, from other sources, how you are going to extract your own proposal, right? So we'll have some discussion on this. So I'm going to stop recording and we can do some discussion on this, right?